Lovely day, my friends. Today, this is one of the very important historic occasion in your lifetime and, of course, in the institution history. First of all, let me welcome the Honorable Chief Guest, शेखावत साहब. आपका यहाँ पे आज आना हुआ, मैं मन से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ. भारत सरकार में सबसे important, one of the important portfolios he is holding, and he comes from a very humble background. And I request, just now you all saw this very film here. You all may be a little surprised also why there is a film shown on the NLC in this particular gathering. But the message is very simple, my dear friends. The dome, what you see here, the very important monument for the world peace, which is created by our beloved founder, the unification of science and spirituality, ultimately to reach towards the world peace, and of course to what are the tools and what are the various other mechanisms, the machines, I mean to say, and the democracy is one very important tool. We saw just now Honorable Prime Minister going down in front of the Constitution, and the Constitution copy is given to each one of you. So I, myself and all our academic leaders sitting here, our founder, we all feel, Honorable Minister, that this is a very important thing, that we as a society, we as a evolving society after 77 years of our independence now, the social belongingness, our societal transformation, the societal problem solving. So who all will do that? So this is you people who are going to pass out from this institution. So all the parents sitting here, I wish to welcome you. I think, I'm sure you all are very proud feeling today that your award is passing out from this institution. All my deans sitting, the directors, program directors, everybody sitting on the dais, they have taken a great efforts for your transformation, my dear students. We have another very important guest of honor here, Shri Ram Charan Sahab, a celebrated management guru and a consultant. At the age of 84, worldwide he is been traveling last 50 years, he's in America, and he has been guiding the biggest corporations of the world, including, the Reliance Group, Adani Group, and various such other ventures in our country also and globally. Thank you, Ram Charan Sahab, for your participation today. We have Shri Vijay Raghavan Sahab. My dear students, this is a very fundamental, he's one of the eminent scientists of the country. Vijay Raghavanji is here. Dr. Mashelkar, who is a very dear friend of our institution, our founder's friend, and who is advising the principal advisory body of our scientific mission at MIT World Peace University. And he felt, and we all felt, that India has to take a leadership. And I think this institution is always championing this very thought, not just in the city of Pune, Maharashtra, but globally, that the India has an important role, because the science and spirituality, the technology amalgamation, when we say, my dear friends, in the days to come, which is that nation which can evolve the capital, the spiritual capital of the world. So this is the country, the Bharat. And thank you, Madam and Dr. Chitnis, you said about transforming India to Bharat, and India name was given by somebody else. So while going, I'm just trying to communicate all of you that keep these certain thoughts, which are very well sowed by our beloved founder, Dr. Vishwanath Karajji, that Bharat ki baat, the originality, the original thinking, not just cut, copy, paste, looking at the West and doing something and making business out of it. That is not a origin of our country, my dear friend, but somehow in the historical background, because of various reasons, we lag behind. But now that time is again coming back, my dear friends. And you people, when you go to corporate and the industry and various such ventures tomorrow, every one of you need to think what way we can change our country. And this, while going, we have given our religious scriptures, the life guiding scriptures is a message of our founder, my dear friends. We have given Bhagavad Gita. Also, we have given Quran also. We have given whoever from that particular faith, we have given other religious scriptures also, Honorable Minister, while going. And the one sapling, they need to show the message of environment in this country. So I think this must be the only university, this Sarvapalli Radhakrishnan ji Pagdi, this our Bharat message. For so many years we have been wearing the gowns, the colonial mindset, the casteism, communalism, corruption, criminalization, and colonial mindset. How do we really fight with all these issues? And we have to give proper solutions. Nothing wrong. We are a global society, but I think not at the cost of,
we can't just say ki we are nobody and others are great, and that's how I think this psychology, because of the so many invasions and other such forces which have changed our mindset, and we all need to think, my dear friends. And I have very fundamental question, Vijay Raghavan sir, that today 80% syllabus, the engineering, mechanical, computer, whatever branches, this syllabus is very well created by the West long back, and some Raman effect and many such other in the syllabuses of our Indian education system we have been trying to imbibe. But today also in management education, Ramcharan Saab, hardly how many Indian cases we are teaching. These questions I'm asking myself and our all academia. We all need to think. The majority, 90% syllabus is created in the West. And recognition and successes symbolize a representation of all of you. So thank you all very, very much. Now, today is a great day for all of you students particularly and your parents. You're going forth into the world. And the world is now a much more complex place than it was even 10 years ago, or certainly over the last 50 years. There are many formidable challenges: climate change, extreme weather events, problems of sustainable development, availability of water, and economic growth. And these problems are genuinely formidable. But there's no problem which cannot be tackled by us having on one side deep domain expertise, but also breaking the silos of these expertise and talking to each other. And that is what a university education is about. It's not only about your classrooms. I would go to the extent of saying the classroom is relatively incidental, but the main feature is your ability to talk to each other, know each other, so that you can break these silos as you go into the world. And when you go into the world, you will have the ability with a phone call to talk to each of your classmates, to others. These few minutes with all of you. I want you to open the doors of your mind. That means let new information come in. Recall today, Naya Bharat. We have been called India by the rulers. Before that, we have been called Hindustan. Our Naya Bharat is on fire. It is on liftoff. Future is what you make. Future does not come from the sky. It comes from people like you, us, other people who are graduating in various parts of Bharat and other places. So I'm going to take you through 6 points in my work. When I sit in Sao Paulo, Brazil, I look at Bharat from that angle. When I'm sitting in Sydney, Australia, I look at Bharat from that angle. When I'm sitting in Beijing, China, I look at Bharat from that angle. When I'm sitting in New Delhi, I look at India from that angle, Bharat that angle. So let me take you point number 1. And that point is, you are graduating in the golden era for the next 50 years. Digest this. You young people are graduating in the golden era. What is that? We're going to grow minimum 6% per annum in GDP, which doubles every 12 years. Our GDP is 4 trillion. In 6 years, it will be 8 trillion. दीक्षांत समारोह में मंच पर उपस्थित वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के संस्थापक, साधारण से अपने जीवन पर यात्रा में असाधारण होने वाले
सामान्य से असामान्य होने वाले, और या मैं कहूं कि समय के थपेड़ों से और अपने अनुभव से अपने आप को तराश करके एक पत्थर से एक हीरे का आकार लेने वाले आदरणीय डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ साहब, मंच पर उपस्थित जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है और विश्व भर में मैनेजमेंट पढ़ने वाला शायद, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाला शायद कोई ऐसा विद्यार्थी होता होगा जो प्रोफेसर रामचरण को नहीं पढ़ता। मैं अभी देख रहा था माइक पर आने के बाद में वो 84 साल का युवा जिस तरह से बात कर रहा था, उनका हर एक शब्द ऐसा था जैसे सागर में से कोई मोती चुन करके निकाला जा रहा हो। और मुझे जिस बात का सबसे ज्यादा डर था, ये जो घड़ी यहां लगी थी वो जो समय बता रही थी कि समय पे की घड़ी पर कहीं उनकी निगाह न पड़े और उनकी ये यात्रा, जो शाब्दिक यात्रा संबोधन के माध्यम से हम सबको मिल रही थी, वो रसधार कहीं बीच में टूट न जाए। लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पढ़ाता है वो ये जानता है कि समय की हर एक क्षण की कितना मोल है। मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं आज प्रोफेसर रामचरण के साथ में यहां इस मंच पर आप सबके बीच में इस कार्यक्रम में भागीदारी कर पाया हूं। मंच पर उपस्थित जिन्हें आज विभूषित किया गया अपनी कर्म यात्रा में, जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा में अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयत्न से, अपने प्रयास से, अपने परिश्रम से, अपनी प्रतिभा से इस देश को निश्चित रूप से बहुत कुछ दिया है, और जिनके साथ में पिछले 5 साल में जब वो नेशनल साइंटिफिक एडवाइजर की भूमिका में काम कर रहे थे और मुझे वाटर एंड सैनिटेशन के फील्ड में काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, उस 5 साल के कालखंड में जिनके साथ में काम करने का सौभाग्य मुझे मिला, ऐसे सम्माननीय डॉक्टर के विजय राघवन, मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और एक विजनरी युवा जिनके पास में असीम जज्बा और ऊर्जा है, जिनके साथ पास में एक दूर तक देख सकने की दृष्टि है, जिनके पास में असाधारण मैनेजरियल और इंप्लीमेंट करा सकने की कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज हैं, ऐसे एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट श्री राहुल कराड़, प्रोफेसर मिलिंद पांडे, प्रोफेसर चिटनीस, मंच पर उपस्थित डॉक्टर जोशी, डॉक्टर कामटेकर, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय फैकल्टी मेंबर्स, सामने बैठे हुए सभी संस्थान परिवार के सभी सदस्य। और जब मैं संस्थान का परिवार कहता हूं तो परिवार में सभी स्टेक होल्डर्स, ऑल फैकल्टी मेंबर्स, ऑल मैनेजरियल स्टाफ, द पेरेंट्स, और आज जिन्हें एक नई जीवन यात्रा शुरू करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिल रहा है, ऐसे मेरे सारे प्रिय विद्यार्थी साथियों, मैं हृदयपूर्वक अपनी बात कहने से पहले धन्यवाद करना चाहता हूं भाई राहुल कराड़ जी का कि उन्होंने ये सौभाग्यपूर्ण अवसर मुझे आप सबके बीच में आने का प्रदान किया है। पिछले 2-3 वर्षों से हम लोग इस बात पर विचार कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, लेकिन कुछ परिस्थितियों के सापेक्ष, और शायद मैं सोचता हूं कि शायद विधाता ने मुझे आज ही के दिन आप लोगों के बीच में आने का ऐसा सौभाग्य दिया था कि जो 2-3 साल से नहीं हो पा रहा था वो आज सौभाग्य मुझे मिला है। मित्रों, जैसा मेरा परिचय कराते हुए कहा गया
कि मैं छात्र राजनीति की पृष्ठभूमि से आता हूं। And when I was sitting here and I was watching the university, the infrastructure, when I had entered, since I had entered from the main gate of this beautiful campus, I was driven with the mixed type of emotions. तो मिश्रित भाव से मैं गुजर रहा था। एक तरफ मुझे पुराने विश्वविद्यालय के दिन याद आ रहे थे। When I was introduced with the Honorable Vice Chancellor of the University, मुझे अपनी छात्र राजनीति के राहुल भाई दिन याद आ रहे थे। हमारे लिए being a student leader और president of the student union, हमारे लिए सफलता के जो सोपान होते थे उसमें वाइस चांसलर से कितना झगड़ा कर सकते हैं। अपने उस 1-1.5 साल के कालखंड में कितने वाइस चांसलर को रेजिग्नेशन करा करके और वाइस चांसलर बदल सकते हैं। वो हमारे सफलता के जो है वो आयाम हुआ करते। मैं याद कर रहा था अपने पुराने विश्वविद्यालय के दिन, जब मुझे छात्र के नाते भी ऐसे समारोह में भाग लेने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। देश भर में आयोजित होने वाली विभिन्न युवाओं के कार्यक्रमों में भी जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ता था, सरकारी विश्वविद्यालय में, वहां इस तरह के कन्वोकेशन होने की परंपरा तो नहीं थी, लेकिन छात्रों के कार्यक्रम में लंबे लंबे भाषण कितने उबाऊ होते वो भी मुझे याद है। लेकिन इस सब के साथ साथ में मैं इस रमणीक परिसर और इस महत्वपूर्ण आयोजन, जहां एक साथ लगभग, जैसा मुझे बताया गया, 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी आज ज्ञान की ज्योति से आभूषित होकर के अपने जीवन की एक नई यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। उस यात्रा में जो कुछ मैंने अपने अनुभव से इतने वर्षों में, उस स्थान जिसकी मैंने चर्चा आप सबके सामने की, वहां से प्रारंभ होकर के इस मुकाम तक पहुंचने में जो कुछ सीखा, जो कुछ जाना, सौभाग्य से आपके साथ में उनमें से कुछ चीजें साझा करने का मुझे अवसर मिला है। On this most auspicious occasion of the 6th convocation ceremony, and what a good fortune, friends, that today we have the most revered and respected chief guest for today's function, Gajendra Singh Shekhawat ji. बड़ा भाग्यशाली क्षण है। जो भी आपने बात किया वो शब्दों का खेल नहीं, वो आपके अंदर की आवाज, आत्मा की आवाज है और शायद मन की बात भी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि one of the greatest person in the field of management, तो गुरु, मैनेजमेंट गुरु, ऐसे तो बहुत होते हैं दुनिया में। एक नाम है जिसका नाम लेती है दुनिया झुक जाती है, उनका नाम है रामचरण जी। भाई मेरे दोस्तों को मेरी रिक्वेस्ट है, कभी उनका जीवन चरित्र पढ़ो, कहाँ से आए, कैसे बने, और दुनिया के सामने एक ऐसा रोल मॉडल, and the words of wisdom which he spoke, about which our honorable chief guest Gajendra Singh Shekhawat ji ने बयान किया। And what a good fortune, friends, हमारे डॉक्टर कृष्ण स्वामी विजय राघवन के बारे में, ये भी बड़ा भाग्यशाली दिन है। Those students and the parents who are present in the Pendal, I know that you will be leaving the portals of this institution after passing your various degrees and the qualifications with PhDs and masters and bachelors. But remember, friends, maybe some of the parents are present here, maybe your grandmother, grandfather must have been waiting at your residence. आपका जो भी घराना है, एक कुलीन घर से आप लोग आए हो,
भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय तत्वज्ञान की जिक्र की जाती है. At the same time we speak about the Google, the Facebook, IT, computer and all these mechanisms which have come to the front. I want to only make one or two statements. It was in the year 1893 when the great noble son of India, Swami Vivekananda, had made a prophecy, and he had told the world in Chicago, in the first World Parliament of Religions, you know it very well, but I have been a staunch follower, the most revered, a messenger of peace, Mahatma Gandhi and Tathagat Gautam Buddha. कि कौन थे, क्या थे, कैसे आना हुआ, क्या मकसद था जीवन का, आप सोच सकते हो. किसी व्यक्ति पूजा की बात नहीं, लेकिन when we are passing through the most chaotic, confused state of affairs today, we are trying to recollect the contribution and the pathway for world peace. छोटी सी बात है, लेकिन अपने जीवन में तुम्हारे माँ बाप जो राह देख रहे, and when you will be leaving the portals of this institution, possibly you have a great duty to perform, which has been very briefly narrated by all the guests because of time constraint. But I feel highly satisfied. मैं यहाँ लंबी बात करने से मुझे बहुत खुशी है. आज के तीनों सम्मानीय अतिथि, इनके मुख से जो बयान हुआ, it was not an information or a data collection. Information, data collection, the message from Google or the Facebook. You know what happens about Facebook. In Lebanon आपने सुना है, क्या दिशा क्या है, कौन सी दिशा में जा रहे हैं, उसके बारे में राहुल ने कहा that we have to adopt a pathway of world peace through the appropriate understanding of the role of science and role of spirituality.